Hello, Assalamu alaikum. This is Salman Khan from skdesigns. Welcome to the channel. आज आपको AI की दुनिया से एक टूल लेके पेश खिदमत है. So basically, this is a sequence of videos where we will just explore some AI tools that we can use in our graphic design, and like we can just get the best out of it. So आज की जो एक ऐसा टूल मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ऐसे साइट में एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो बेसिकली आपको जो जनरेटिव एआई है उसके थ्रू बहुत हाईली क्वालिटी इमेजेस आपको एक्सपोर्ट करके जनरेट करके देगा, और यू कैन यूज देम इन योर डिज़ाइन, और इधर यू कैन यूज द फोटो एडिटिंग टूल्स, और उनके थ्रू आपको इसमें चेंजेस ला सकते हैं, फोटो मैनिपुलेट कर सकते हैं, देन यू कैन जस्ट अर्न फ्रॉम देम. सो बेसिकली यूजिंग एआई इट्स रियली सिंपल नाउअडेज कि हम अर्निंग करें, अपने स्किल्स को प्रो लेवल तक लेके जाएं, और जो एक्सपेक्टेशंस हमारी थी चीज़ें बनाने की, नाउ वी कैन डू दैट यूजिंग एआई. So let's jump into the site, and the site is Playground. So many of you have gone through that. मैं आपको ज़रा Playground की चीज़ें explore करके बताऊँ. So you have to just move to your desktop and you have to just write playground.com, and you can see the dashboard of the Playground. यहाँ पे आपको default में बहुत सारी images नज़र आएंगी. You can see someone have written this prompt, and he have got this image, and this is basically a gallery as well. So the Yulia has generated this image and 40 people have liked that. So ये एक proper dashboard आपका है. So let's jump into the designing thing, the workspace where we will design or generate our images. So it's really simple. मैंने already sign up किया हुआ है. You can sign up using your email, or you can just go with your Google or Apple, whatever you want. So बहुत ही अच्छा जो इंटरफेस है इसका, लाइक बहुत सारों ने जो है ना यूज़ किया होगा फिग्मा को, फ्रेमवर्क को. सो उस तरह का इंटरफेस है इसमें. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेन्यू है, ठीक है, विद सम instructions like image to image things, then you have to put the prompt filters as well, और यहाँ से आप अपनी preset सेट कर सकते हैं like we do in Adobe Firefly. So ये चीज़ है. लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि you can adjust your you can say like your artboard size as well, कि किस साइज का आपने बनाना है. ठीक हो गया, चलें. सो इस चीज़ को रख लेते हैं फिलहाल के लिए. लेट्स मूव टू ओवर हियर. प्रीसेट्स में आपको मैं ज़रा इंट्रोड्यूस कराऊँ. यू कैन मेक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स और फैंटेसी वर्ल्ड. सो लेट्स सी वी आर मेकिंग एनी फैंटेसी थिंग, और ये इसने डिफ़ॉल्ट में जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसने मुझे एक डिफ़ॉल्ट सा प्रॉम्प्ट दिया हुआ है. इट्स सेइंग पोर्ट्रेट ऑफ अ सीजन फिशरमैन विद स्किन. वी डोंट नीड दैट. लेट्स सी फैंटेसी character with swords in hand. Okay, then also we have to select okay, open it, and we have to select the fantasy. So I'm just pasting the same prompt and that's it. यहाँ से आप भी अपना prompt select कर लेंगे. यहाँ से आप अपने मॉडल को भी select कर सकते हैं, like मॉडल प्लेग्राउंड V 2.5 है, V.2 है. एक्स्ट्रा थिंग लाइक इट्स यूजिंग स्टेबल डिफ्यूजन एज वेल. ठीक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. तो लेट्स सी प्लेग्राउंड 2.5 हम ले लेते हैं, ठीक है, और ये हमारे डायमेंशन होगी. लेट्स सी हम इंस्टाग्राम के पोस्ट के साइज का, ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में कर लेते हैं. और यहाँ से आप अपने नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग विथ only one generation. Let's select make it 2. Okay, so I have just hit the generate button. So after few seconds my generate image will be appear only. So ये चीज़ें आपको
बहुत ही सिंपल है. You can see like this. Wow. So I just wrote a fantasy character with swords in his hand. So you can see the result is over here. So अब बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, you can save it on your gallery or wherever you want. Okay, so you can see the quality of the image. It's really awesome. जो प्लेग्राउंड आपको बना के दे रहा है, इट्स रियली ऑसम. और जो इसकी बाद की फीचर्स है, लाइक यू कैन रिमूव द बैकग्राउंड, लाइक इट विल जस्ट कीप द सब्जेक्ट एंड इट विल रिमूव द बैकग्राउंड. ओके, दैट फीचर वी हैव इन द फोटोशॉप एज वेल, अगर आप प्रीमियम चीज़ें यूज करें. दिस इज इट, दिस इज द बैकग्राउंड रिमूव इमेज. लेट मी अनडू इट. और आप इमेज टू इमेज भी कर सकते हैं, लाइक इस इमेज से फर्दर इमेजेस आप ऐसी वेरिएशन बनाएं. यू कैन क्रॉप इट, यू कैन डिलीट इट, or you can either do some flip and flop, these kind of things. So from that you can imagine that the basic things जो कि हम Photoshop में कर रहे थे, वो चीज़ें अभी AI के थ्रू within a clicks हो रही हैं. So guys, the reason is that I am just showing this tool. It's not like कि graphic designing खत्म हो रही है. Graphic designing को नए ways मिल रहे हैं. Like you can do the things that are not possible in our past, and now you can do that. और आप उससे अच्छा कर सकते हैं. अब using that you can do anything. ठीक है, again AI अभी learning phase पे है, और I don't know कि ये जो है ना कब उस काबिल बनेगा कि it can do that human are doing. ठीक है, so it will take time. Till that you can learn from it, you can do your basic small things from it, और that's it. बाकी चीज़ें मैं ज़रा आपको इसके बारे में बताता चलूँ. You can make it the number up to 4 in the like जो आपकी जो ट्रायल वर्जन है, या आप कहें कि जो बेसिक वर्जन है फ्री में, उसमें आप 4 कर सकते हैं. अगर आपने 5 की तरफ जाना है तो you have to buy their premium service. So apart from that you can just exclude, or you can add some filters like this. lush illumination है, आप चाहें तो radiant symmetry यूज कर ले, अल्ट्रा लाइटिंग यूज कर ले. आप जिस तरह का भी इमेज को लुक देना चाहते हैं you can do it. ठीक है, so I will not waste your time. It's time to you to jump into the playground and do some work. तो आपका जो playground है, it's basically awesome while doing book covers. So yeah, so you can check my Insta. The link will be in the description, and you can see कि किस तरह के मैंने book covers बनाए, और they were really awesome using Playground. So yeah, that's it from my side. I will be taking another video with more updates. Like I was with the Playground, और next जो चीज़ होगी वो फिर next video में इंशाल्लाह आपसे शेयर होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और डिज़ाइन के साथ खेलते रहें, और ग्राफिक्स के साथ खेलते रहें. एंजॉय एंड लिव इन द कलर वर्ल्ड. थैंक यू सो मच.